हाय फ्रेंड्स, मैं रवि। आज मेरे पास आई है मारुति बलेनो न्यू। उसका सस्पेंसर है, नॉइज़ कर रहा है। मैं आपको अभी सुनाता हूँ, सुनो। जैसे मैं यहाँ हाथ से दबाऊँगा, आप सुन सकते हो, आवाज़ आ रही है। अभी मैं खोलूँगा इसका सस्पेंसर, शॉकर, लिंक रोड, लो आर्म। आप देख सकते हो, जैसे हाथ से मैं हिलाऊंगा, अभी मैं खोल रहा हूँ इसका सस्पेंसर। अभी इसका सस्पेंसर खोलने का चालू है। यहाँ पे सस्पेंसर खुल रहा है। शॉकर के नट में स्प्रे डाल दिया है। शॉकर के नट खोलने को भी बाकी है। अब इसका सस्पेंशन का सामान मंगाया है, सारा ओरिजिनल मारुति सुजुकी का जेन्युइन। लो आर्म के जो शॉकर वॉकर सब मंगा लिया है। हाय फ्रेंड्स, मैं रवि, जय बहुचर ऑटोमोबाइल्स, गांधीनगर गुजरात से। आज हम करेंगे बलेनो की जनरल सर्विस। जनरल सर्विस में क्या क्या आता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले हम करेंगे इसका इंजन फ्लशिंग करेंगे। ऑयल चेंज करने से पहले मैं कैस्ट्रॉल इंजन शैम्पू डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो। ये डालने के बाद गाड़ी में 10 से 12 मिनट तक चालू रखूँगा आइडल पोजीशन पे। और उसके बाद में उसका पुराना ऑयल निकालूंगा, आपको दिखाऊंगा फिर ऑयल की कंडीशन। भाई डालो। फ्लशिंग डालने के बाद गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट ही चालू रखनी है। ऐसे तो डिमांड 10 से 12 मिनट ही है, पर 15 मिनट तक आप रख सकते हो। अब इसमें फ्लश ऐड कर दिया है हमने। करो भाई गाड़ी चालू। अभी गाड़ी चालू कर दी है, 10 मिनट तक उसको आइडल चालू रखेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। अभी फ़िलहाल 10 मिनट चालू रखूंगा मैं। फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गई है, हमने कार बंद कर दी है। अब हम करेंगे इसका ऑयल ड्रेन। अब नीचे जा रहे हैं हम ऑयल ड्रेन करने। चलो भाई। गेज निकाल दिया, कैप निकाल दिया। अभी हम करेंगे इसका ऑयल ड्रेन। अब
अभी हम नीचे आए हैं इसका ऑयल ड्रेन करने के लिए। ये इसका चैम्बर है। 14 नंबर के स्पैनर से यहाँ से ये बोल्ट खोल के हम इसमें से पुराना ऑयल ड्रेन करेंगे। बोल्ट खोल दिया है। इसका ऑयल ड्रेन हो गया, आप देख सकते हो कितना पतला हो गया है ऑयल। अभी हमने चैम्बर से बोल्ट तो ड्राई कर दिया, अभी इसका खोलेंगे ऑयल फिल्टर। ये हम उसका ऑयल फिल्टर खोल रहे हैं। दो मिनट में 2 मिनट ज़्यादा थोड़ा फिरते थे, ऑयल ना निकले, खराब ना होगा जब, इसलिए। बोलो एक एक। अभी ऑयल फिल्टर भी ड्रेन हो गया है। अभी इसका ऑयल फिल्टर लग रहा है। रेडी बोल्ट रेडी। चैम्बर ऊपर मार दीजिए। बनने पाऊंगा।
हम इसमें गियर ऑयल डालेंगे। गियर ऑयल कैस्ट्रोल 80W90। साढ़ा 3 क्रेटा में 5 लीटर बस गियर ऑयल कर दो बंद। अभी हम इसमें इंजन ऑयल डाल रहे हैं। कैस्ट्रोल मैग्नेटिक 5W30 फुल्ली सिंथेटिक ऑयल डाल रहे हैं हम। ये नजीक तो ऑयल तो दिखा। गाड़ी जो हमें ड्रेन दिखाई। इसका एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर चेंज होगा। गैस में कर दे तो डायरेक्ट गैस में। हाँ क्या गाड़ी हाथों में दोगा। राइट लगा तो ध्यान हुआ गाड़ी तो पता है। अभी मैं डाल रहा हूँ नया स्पार्क प्लग। जनरल किसी कौन है सर्विस कोई तो स्पार्क प्लग खोलतू नहीं। बदलवानी तो बात दूर चेक ही करतू नहीं। अभी हम इसका कूलन निकालेंगे। अभी हम डाल रहे हैं इसका केबिन फिल्टर एसी फिल्टर। एसी फिल्टर यहाँ अंदर डैशबोर्ड की डिक्की के अंदर आता है।
हाँ हाँ હવામાન જ છે ને રવિ ખોઈ દે રવિ हाँ